कैसे आप ये टेक्नोलॉजी आईटी वाली साइड पे डिजिटल वाली साइड पे आए हैं? So I believe payments is one thing, you can digitize everything, but if it is not reaching the right people, उनकी डिजिटलाइजेशन कैसी लगी आपके थ्रू आउट कैरियर में? not everybody can integrate APIs quickly. So our play and our understanding about the market was because we were coming from Egypt. डिजिटल होने जा रहा है और क्या क्या फायदे हम उससे उठा सकते हैं? They must be involved in a lot of different challenges. They're building the rails. I take it as a complementary product to them. Shopify पे हमने वेबसाइट बना ली है, हमें समझ नहीं आ रही कौन सा पेमेंट गेटवे लगाएं, इतने ज़्यादा पेमेंट गेटवे हैं, अच्छा कौन सा है, चार्जेस क्या हैं, Shopify के क्या चार्जेस होंगे? So that is where the play is. We want to enable these startups, these merchants. क्या कोई पेमेंट गेटवे या क्रेडिट कार्ड से भी हम पेमेंट ले सकते हैं? We do have that digital onboarding as well for payment. Great. So you can get on our website, sign up there. अस्सलाम दोस्तों, मैं हैदर अहमद काजी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लोकल ई कॉमर्स। और आज लोकल ई कॉमर्स की ये जो काविश है, जो पॉडकास्ट हम स्टार्ट की हुई है डिप्लॉयर्स एंड एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ मिलके, उसका बहुत ज़बरदस्त एपिसोड होने वाला है। आप सब लोगों के सवाल थे, शॉपिफाई पे हमने वेबसाइट बना ली है, हमें समझ नहीं आ रही कौन सा पेमेंट गेटवे लगाएं, इतने ज़्यादा पेमेंट गेटवे हैं, अच्छा कौन सा है, चार्जेस क्या हैं, शॉपिफाई के क्या चार्जेस होंगे, क्या कोई पेमेंट गेटवे या क्रेडिट कार्ड से भी हम पेमेंट ले सकते हैं? ये सब सवाल आपके आज दूर होने वाले हैं, क्योंकि फिनटेक कंपनी के बहुत ही ज्यादा तरक्की से बनते हुए नाम को आज हमने यहां बुला लिया है, मिस्टर रजा फ्रॉम पेमॉब। अस्सलाम वालेकुम रजा, कैसे हैं आप एंड वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। Walaikum assalam. Thank you very much, Haider, for such a nice introduction about the company and about myself. थैंक यू रजा। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बिफोर मूविंग एंड जंपिंग इनटू द पेमॉब, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कैसे आप ये टेक्नोलॉजी आईटी वाली साइड पे डिजिटल वाली साइड पे आए हैं और किस तरीके से आपका सफर रहा, कहाँ से आपने, क्योंकि आप डिफरेंट बैंक से भी हैं, उनकी डिजिटलाइजेशन कैसी लगी आपके थ्रू आउट कैरियर में, और आगे आने वाला टाइम आप कैसा देखते हैं कि किस तरीके से डिजिटल होने जा रहा है और क्या क्या फायदे हम उससे उठा सकते हैं? Sure, thank you. अच्छा, करियर का स्टार्ट थोड़ा इस तरह हुआ कि सिटी बैंक से हुआ था वो, but that back in during graduation years. But then I went to London, came back after studies, was lucky to become part of Telenor. तो वहाँ पे GSM साइट देखी, वहाँ पे हमने मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज की साइट देखी, and I moved to Jazz. फिर उसके बाद थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ मुझे उस वक्त करियर में कि यार अब ऐसा वक्त आ गया शायद कि now digital will take over everything. So traditional sales will go away. So that's why I intentionally moved towards digital banking. I was lucky to become part of UBL, and UBL's journey when it was moving from a traditional bank to a more digital bank. Okay. It was a very fulfilling journey. We developed the app. It's such an amazing application. I still use it and I love it. That experience prompted me, and then I was like, digital payments was happening. Then there is another thing which is like improving the experience of customer. Okay. So I got another opportunity to work with Infobip for digital communication. Okay. So I believe payments is one thing, you can digitize everything, but if it is not reaching the right people, if they are not communicating with you, then the experience does not improve. Okay. So वो फिर हमने Infobip का part रहा, I became part of eOcean, and now Alhamdulillah we are doing digital payments at Paymob. I'm heading enterprise business. Here we are. So our aim is to digitize the economy of great. Pakistan. So we are coming up with a lot of products, Alhamdulillah, and we can definitely discuss more about it in detail. Okay, so what are the different benefits of the Paymob and how you are integrating it to the Shopify websites and how easy it is, and जो newbies हैं उनके लिए क्या solutions आप लोग लेके आए? So सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है, हमें भी फेस होता था पिछले दिनों में जब लोग पूछते थे कि यार क्या किया जाए, कौन सा गेटवे यूज़ किया जाए, वो था, इफ़ यू टॉक टू, आई एम नॉट सेइंग in a bad way, but when you look at banks, they have got different priorities, they have got different advantages. So there were no ready plugins available. Exactly. So for a smaller business, for a startup especially, when we talk about it, so the documentation requirement was way too long. And okay, if the startup is able to meet those document requirements, then integration used to take a long time. Yes. Everything. So not everybody can integrate APIs quickly. So our play and our understanding about the market was, because we were coming from Egypt, is to have ready to use plugins. Okay. Because we started off by the founders wanted to establish an e-commerce website actually. So when they went to the banks
to get the gateway, that's when they realize how difficult it is. Oh my God. So they started the journey of providing plugins, how to make it easier for everybody. Smaller business, bigger business, everybody wants to accept digital payments. You know better than me the importance of it, how prepayments are significantly important for the business. रज़ा, आज तक इतने बड़े बैंक्स हैं, HPL है, बाकी और डिफरेंट बैंक है, UBL है, Shopify की एक प्लगइन नहीं बना पाए. मतलब दिमाग सोच नहीं, वही पुराने ट्रेडिशनल वेज के साथ चल रहे हैं. भाई आप अपनी टेक टीम को बिठा दें. अब टेक का बंदा नहीं रखते भाई. Shopify ने बहुत आसान कर दिया है. अब अगर आपको थोड़ी सी नो हाउ है या एजेंसी अगर आपने ऑनबोर्ड की हुई तो नहीं जरूरत पड़ती इतनी टेक्निकलिटीज की. बट बैंक्स को आज तक ये चीज समझ क्यों नहीं है? जैसे आप ही बता रहे हैं कि एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाई हुई थी फाउंडर्स ने और उन्होंने देखा कि इतना अजाब उन्होंने पकड़ के प्लगइन बना दिया. तो मैन यू कैन, व्हाई नॉट दीज बैंक्स जिनके पास इतने बजट्स हैं, सर्विसेज पे इतना खर्चा करें, रिसर्च पे इतना खर्चा करें और आज तक एक Shopify का प्लगइन नहीं बना सके. I'm sure they must be involved in a lot of different challenges. They're building the rails. I take it as a complementary product to them because they are our partners and we are accepting payments on behalf of the banks in certain ways, taking payments from the card which are issued by the banks. So we are in a way partners, but yes, that is where our play comes. Our focus mainly is on the service. Okay. So Paymob's play, any fintech's play is based on service level. How quickly you can provide it, how easily you can provide it, definitely. So the plugins play a significant role in that. If the ready plugin is available, every merchant should be able to. And if we talk about Shopify, to be very honest, my salespeople, they can easily integrate the plugin in merchant's website as well. It's so easy. That's easy, exactly. That is where the excitement is. That is where, alhamdulillah, we have been able to, in such a short span of time, been able to onboard a lot of merchants. Yes, and exactly. मैं alhamdulillah, देखता हूँ कि Paymob मार्केट का बहुत ज़्यादा शेयर लेके जा रहा है. आपके रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं, आपके पास सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं. अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो Paymob दे रहा है और कैसे फैसिलिटेट उसको करें? क्या हम बैंक डिस्काउंट अगर कोई स्टिक करना चाहते हैं किसी बैंक का, तो क्या वो फैसिलिटी भी Paymob देता है? अच्छा, कार्ड्स तो हैं, जैसे आपने बोला, कार्ड्स बैंक्स भी देते हैं, हम भी देते हैं. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोकल, इंटरनेशनल, ऑल देम थिंग्स. हमारा प्ले बना है बिकॉज वी आर एन एग्रीगेटर. वी सिट ऑन टॉप ऑफ ऑल द बैंक्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स. सो हमने एग्रीगेट किया कार्ड्स पेमेंट्स को भी, अकाउंट पेमेंट्स को भी, वॉलेट पेमेंट्स को. सो देयर आर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस दैट यू कैन यूज टू रीच आउट टू योर कस्टमर्स. उसका बेनिफिट एक जो बहुत बड़ा वो है कि एक तो आपकी रीच तो बहुत बढ़ गई. कुछ लोग हैं जो वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट अकाउंट से करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो यूज टू हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू और डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं. एक तो वो मार्केट अवेलेबल है. सो आप हमारा प्लग इन यूज करके उनसे पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं. और फिर नॉट ओनली पेमेंट गेटवे, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है. हमारे पास सॉफ्ट पॉज है, हमारे पास POS है जो एंड्रॉइड बेस्ड POS है. So we are offering not only multiple payment option but multiple acceptance options. Okay, so मतलब अगर किसी की दुकान भी है और वेबसाइट भी है तो ना सिर्फ वो आप एक ही मर्चेंट को वेबसाइट पे भी अलाउ कर रहे हैं और उसी की दुकान पे वो पॉज भी लगा हुआ है, उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं. So it's very simplified, unified dashboard. Because I mean, of course, you know better than me, and I've learned from people like you that how important it is to have a unified dashboard. Exactly. Which tells you, okay, what is happening on my shop, what is happening on my e-commerce, what is happening on my rider side. If you get that view, that is good enough for you to make an informed decision and a better decision. Exactly. So that is where the play is. We want to enable these startups, these merchants, and we are not only enabling these merchants, but we are also focusing on larger merchants as well, because they have got brick and mortar, they have got e-commerce. They want to unify those dashboards as well. Okay. So what is the difference between Paymob and all the other players, which are very few, but again they are available in the market? I don't want to take the name, but what is the best USP that Paymob is right now having? Firstly, I would like to definitely appreciate, because the pie is bigger. Pie is bigger, exactly. There are merchants coming online every day. The number is increasing. So there are very few of us. And we are doing a good job, but our USP is firstly and foremost is the aggregation of different payment methods. Okay. So what we have come up with is cards, wallets, accounts, ready to use plugins for not only Shopify, Magento, WooCommerce, CS Card,
all of these options. We also have iframing available, SDK available. So if a business is having an application, they can use the SDK. If the business is having a custom website, they can use APIs as well. If they are on Shopify, Magento, WooCommerce, they can use that as well. Okay. That is one thing. Then we have got 24/7 customer service. Great. We have got a dedicated account manager. Mm-hmm. So our play, like I mentioned earlier, is service. We take pride on that. We don't say that it will be only the price that will make the difference. We want us to be placed as someone who added value to your business. Okay. So if I'm helping you as a business to improve the cost of customer acquisition and reducing the decline rates, I think I will be a better partner rather than someone who just comes to you, offer lower price and gets the volume. Then I'm not consulting you. I'm not adding value to you. I, as a payment provider, should be confident on my product, should know what the payment industry is all about, and should be able to offer different options, like maybe a bill level discounting is something that we offer. Great. It is very attractive for this market. Great. We offer these options, and which is where our play is. How easy is to open an account on Paymob? For example, if some startups are coming and they want to have Paymob on their website, so how easy is it to start, and is it requires a lot of documentation that other banks do, or is it just a click away, or just anyone make an account by just signing up? It's a kind of a digital form on the website. We do have that digital onboarding as well for payment. So you can get on our website, sign up there, take the credentials from there, test it out, do the integration and all, and then simultaneously you will be tagged to an account manager who will reach out to you, help you with the documentation. There are not a lot of documentation. Very simplified. We take them digitally as well. Okay. And we enable you quicker. So what we say is, and what we actually provide is, if the documentation and everything is complete, you can go live in a matter of 10 minutes. Wow. It is as simple as that, to be very honest. Wow. रजा, एक बहुत बड़ी मार्केट है जिनके पास वेबसाइट्स नहीं है. अगर मेरे पास वेबसाइट्स नहीं है, मुझे फिर भी ऑनलाइन पेमेंट चाहिए, तो क्या पेमॉब कोई ऐसा सोल्यूशन दे रहा है कि स्टिल आई कैन टेक ऑनलाइन पेमेंट अगेंस्ट माय ऑर्डर? मतलब बहुत स्टार्टअप से भी बिलो लेवल, लाइक ये वो लेडीज हैं जो कि कॉस्मेटिक अपने इंस्टाग्राम पेजेस से बेच रही हैं. अब आपने देखा है कि शॉपिफाई ने भी कुछ इस किस्म के मोड्स अरेंज कर दिए हैं कि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो देन स्टिल यू कैन टेक पेमेंट फ्रॉम शॉपिफाई पेमेंट्स. तो क्या पेमॉब के पास ऐसा कोई सोल्यूशन है? Thank you very much for asking, and this is something, like I mentioned, we are here to digitize the economy. So बहुत बड़ी मार्केट है. हमें देखते हैं स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से हमें पता है कि तकरीबन 4,500 मर्चेंट्स डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं. Okay. बड़े भी छोटे भी जिनकी वेबसाइट है, जिन पे गेटवेज लगे हुए हैं. बट बहुत बड़ा चंक है, लाइक यू मेंशन, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सेलिंग कर रहे हैं, इवन व्हाट्सएप पे कर रहे हैं. सो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में ऑफर नहीं हो रहा था, विच इज वाया पेमेंट लिंक्स. सो थ्रू आवर डैशबोर्ड यू कैन क्रिएट अ लिंक. उस लिंक पे बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन इंस्टाग्राम सेलर, आई वॉन्ट टू सेंड एंड रिसीव डिजिटल पेमेंट फ्रॉम यू. आई एम सेंडिंग अ फ्लावर. यस. सो मैं वहाँ पे फ्लावर की पिक्चर शेयर कर दूंगा, वहाँ पे उसका अमाउंट लिख दूंगा, उसका एक लिंक जनरेट होगा. आई कैन शेयर इट ऑन SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, विच एवर मीडियम आई वॉन्ट. वो 24 से 72 आवर्स तक की उसकी एक्सपायरी है. उसके अंदर वो पेमेंट वो कस्टमर के पास रिसीव होगा. वो क्लिक करेगा, एक डैशबोर्ड, उसके पास इंटरफेस खुलेगा, वहाँ पे वो अपनी कार्ड की डिटेल्स डालेगा, पेमेंट इज प्रोसेस. कस्टमर को भी पता चल जाएगा कि हाँ जी डिडक्शन हो गई, और मर्चेंट को देन एंड देयर उसके डैशबोर्ड में नजर आ जाएगा कि हाँ जी पेमेंट एक्सेप्ट हो गई. एंड बाय दैट आई मीन, अगर पेमेंट एक्सेप्ट हो गई, then after 2 days it will be in your account. जबरदस्त. मतलब ये देखें ना कि this is the kind of a digital disruptions जो हम चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर. अब वेबसाइट बनाने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई, अब सिर्फ काम स्टार्ट करने की ज़रूरत है. आप अगर फ्लावर का ठेला लगा के बैठे हुए हैं, आप कोई केक बेच रहे हैं, आप इवन रेडी में मौसमियाँ बेच रहे हैं, आप वो भी ऑनलाइन बेच सकते हैं. देखिए इंडिया के अंदर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यार, अब वहाँ पे छोटी छोटी रेडियो के ऊपर वहाँ QR पेमेंट्स हो रही है, भारत पे है, पेटीएम है, और हम आज तक इस चीज़ से निकल ही नहीं पाए. देखिए सबसे बड़ी पेन क्या होती है, वो यही होती है, कस्टमर डरता है पेमेंट करने से, इसलिए ज़्यादातर अमाउंट COD है, और वेंडर जब तक पेमेंट नहीं आती वो पीछे से खरीद के आगे आपको नहीं दे सकता. तो ये चीज़ जो आप लोगों ने चेंज करने की कोशिश की, आई थिंक दिस इज़ द वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट. और आई थिंक ये लोकल ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर ज़रूर बहुत आगे जाएगा.
रज़ा, कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहते हैं एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं, लोकल ई कॉमर्स सीख रहे हैं? एक तो बड़ी आसानी आपने उनके लिए कर दी पेमॉब जैसी चीज़ का बताकर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में से मैंने बताया कि हेल लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, अगेन नहीं पता, कोई बैंक नहीं दे रहा कि कौन सा प्लगइन अच्छा है, कैसा है, पेमेंट सॉल्यूशंस इस वक्त मार्केट के अंदर कौन से हैं। दैट्स वाई हमने ये सेशन भी रखा है ताकि लोगों को पेमॉब का पता चल सके। इसके अलावा कोई भी ऐसा मैसेज जो आप इनको देना चाहें? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहला पैगाम तो मेरा ये है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डिप्लॉयर्स का एंड हैदर का कि इस तरह की पॉडकास्ट हो रही हैं, सो दैट यू कैन डाउनलोड दिस एक्चुअली एंड लिसन टू इट। दैट्स व्हाट माय प्रैक्टिस इट। अगर कोई भी मुझे पॉडकास्ट अच्छा लगता है, मैं अपने पास डाउनलोड करता हूँ, ऑफिस आते हुए जाते हुए सुनता हुआ जाता हूँ। तो जब आप ज़्यादा सुनते हैं तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, और फिर आपकी क्वेरीज हैं तो इन जैसे लोग, हम जैसे लिमिटेड कैपेसिटी में जो नॉलेज शेयर कर सकते हैं, वो आपसे उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे नेटवर्क करें, लोगों से मिलें। जितना ज़्यादा मिलेंगे आपकी अवेयरनेस ज़्यादा होगी चीज़ों के बारे में, क्यूरियस आप ज़्यादा होंगे, ऐड वैल्यू कर सकेंगे अपने बिजनेस में, दूसरों के बिजनेस में। सो मैं यही चाहूँगा कि नेटवर्किंग करें, एक दूसरे से बात करें, कोई क्वेरी है तो उसके बारे में पूछें, बजाय इसके कि अस्यूम कर लें कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। दूसरा, जैसे हैदर ने शेयर किया, अब ये वो वक्त आ गया है, इस वक्त बिजनेस इनिशिएट करने के लिए आपके पास आइडिया होना चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इससे भी शुरू करना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ चलें उसके ऊपर भी नहीं जाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर शुरू कर लें बिजनेस। Every option is available now. It's about time for you to take advantage of it. Grow yourself, grow the business, bring the money into Pakistan, ताकि हम सब अच्छे तरीके से रह सकें इस मुल्क में। देखिए कितना आसान हो गया कि अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लेनी है तो पेमॉब पे देखिए साइन अप करना कितना आसान है। वो बता रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके साइन अप कर सकते हैं, वेबसाइट नहीं है कोई मसला नहीं है। हमने ऐसा फीचर बना दिया कि आप किसी को लिंक भेजें और अगले बंदे की पेमेंट हो जाएगी, मत बनाएं वेबसाइट। अब तो स्टार्ट कर लेंगे, अब भी स्टार्ट नहीं कर सकते तो फिर आए डिप्लॉयर्स के पास, हम आपको स्टार्ट करवा के छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच रज़ा फॉर टुडेज टाइम एंड इस पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।